Yeah. So हम लोग कहाँ पे थे? Methods. Sorry. Transition approach, na? Transition approach. So transition approach we have discussed. Post that, so there are few of the practical experience in India's 116. So one of the, so so जब हम लोग generally leases में enter करते हैं ना, let's talk about this building leases. So what happens in building leases is that suppose you are making a payment of, let's say, 50,000 for a building, then there is a payment of that 5,000 extra for the maintenance charges of the building. So tell me whether we need to include those 5,000 in our lease calculation, or do we need to exclude that? Sir, in lease we have to identify the lease component as well as the non-lease component, and sir, the for the repairment. Sorry, Shilvi, your voice got broke. Sir, sir, in lease we have to identify the transaction in the two phase. First is lease component and second is non-lease component. And so the charges that we are paying of rupees 5,000 for repair and maintenance will be the non for the same. Fine, I have identified. That's what I'm saying कि वो lease के लिए हम 50,000 पे कर रहे हैं, non-lease के लिए हम 5,000 पे कर रहे हैं. Next, what do we need to take that 5,000 in our computation or not? I have identified this 5,000 as a non-leased component. Now, do we need to take that under in our contract or not, in our calculation of lease liability or not? No, sir. In RUE assets, we can include it. In RUE assets, we can include. मतलब RUE assets में तब include करेंगे ना जब हम lease liability में इसको compute लेंगे computation में. Because what is ROU? ROU is something that is PV of your future lease payments plus any initial direct cost plus any decommissioning liability. So this sums up and becomes ROU. So if you take this in your lease liability, then only you will be able to take it in ROU. No, otherwise कैसे ROU में ले जाएंगे आप? So let me answer this. So basically, India gives this practical experience. Choice होती. Yeah, India has given this choice that separating lease component from the non-lease component is a policy choice of the company. They might separate it, they might not separate it. If they don't separate it, they can make it as a part of this lease component only, and then in that case they won't be debiting any maintenance charge in the PL. Rather, entire expense will be charged as interest cost on the lease liability. तो इसमें क्या होता है ना, जनरली if so you are entering into 100 leases, तो क्या होता है किसी में identified रहता है, किसी में identified नहीं रहता है. So if the company has identified all the non-lease component, then in that case for all the contracts, if it has identified all non-lease component, then in that case they exclude it. But जहाँ mix होता है ना, generally they try to include it. Okay. Sir, if the separated will be shown in the profit and loss account, no? Sorry. Sir, if the company is separating the lease component as well as non-lease component, then it will be shown in profit and loss account for repair and maintenance. हाँ, तो PL में maintenance charge जाएगा. It will be debited in PL as a maintenance charge. Okay, sir. Okay. So now, can anyone tell me the basic question: how to record ROU and lease liability in books? The ROU will be debited and lease liability will be credited. ठीक है, ये तो हो गया. कैसे? Sir, How numbers will be calculated? Sir, in lease liability we have to calculate the present value, and in ROU asset we have to period, and then we have to record it. Present value at what rate? Net discounting rate. So IRR of the IBR. lesser. Okay, yes. So IRR of the lesser. IRR of the lesser is और what? इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट भी हो सकता है. हाँ, दोनों ही चीज है. So if the IRR rate of the lesser is not known, so there the technical IBR of lessee. Yeah. So that's the technical term that India uses, the interest rate implicit in the lease. So interest rate implicit in the lease is the rate at which the fair value of your asset is equal to the PV of your present value of your lease liability. So that is the interest rate implicit in the lease. The second point is that if that is not available, then in that case you can take the incremental borrowing rate of the lessee.
So incremental borrowing rate is the rate at which such asset with similar nature, similar value, with similar security, at what percent the bank will lend to the your lessee. अगर आपने ट्रक लिया तो अगर आप ट्रक ले रहे हैं लीज पे, तो if you go to purchase that truck, then with the same security, then at what rate bank will lend you. So that is the incremental borrowing rate. So उसी एसेट का उसी सिक्योरिटी के साथ, उसी टाइप की सिक्योरिटी के साथ जिस रेट पे आपको मिलेगा, that is your incremental borrowing rate for the lessee. So at that date ROU equal to lease liability is the basic funda, but just remember कि ROU is not always equal to lease liability. You have to consider ROU equal to lease liability plus lease liability means the PV of your future lease payment plus any decommissioning liability if it is there plus any initial direct cost. ठीक है, ये तीन चीजें जनरली रहता है हर जगह. Yes, sir. If any ये तीन कंपोनेंट आता है ROU का. ठीक है. Okay, can we move forward? Yes, sir. Yes. Okay, so tell me how we will measure ROU going forward. Day one को तो हम measure कर लिया ROU equal to lease liability. आगे क्या करेंगे? So we will depreciate it over the lease term. Depreciated. Unwinding करेंगे. Sir, we will adjust for remeasurement of lease liability, and we will also adjust the depreciation impairment. इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, impairment नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है. Then We will calculate interest ऐड करेंगे. इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे. वो तो लीज लायबिलिटी में करेंगे ना. ROU का पूछ रहे हैं. Sir, depreciate करेंगे ना, depreciate over the lease term. हाँ. Sir, depreciate ही करेंगे over the lease. What I was trying to say ना कि Ind AS 116 give us two options for ROU as well. One is the cost model and second is the revaluation model. So cost model में क्या होता है कि आप depreciate करके उसको ले जाइए. The revaluation model में क्या होता है ना कि if there is a similar asset that is in your books of accounts, similar class of asset, and you have opted the revaluation model for that asset in your Ind AS 16, अगर आपके पास भी ट्रक है और आपके पास भी बिल्डिंग है, आप उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, then in that case Ind AS has given the option that those ROU, that is the ROU relating to building, can also be revalued. उसको भी आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले जा सकते हैं. ठीक है. So one is the cost model and second is the revaluation model. Okay. These modifications कैसे काम करेंगे जी? Can anybody say how to account for lease modification? There is some background noise coming, not sure whose it is. Separately and by modification. Can you tell how to account for lease modification? There is two ways. Yes, sir. बोलिए. Separate modification. कैसे मतलब? हाँ बताइए ना प्रियंका, बताइए आपको क्या आ रहा है, बताइए. जिसमें एडिशनल राइट मिले और जिसका स्टैंड अलोन प्राइस हो, तो वो सेपरेट मॉडिफिकेशन होगा. ओके. और दूसरा? और दूसरा जो एग्जिस्टिंग में मॉडिफाई होगा. ओके. और फिर? So basically let me tell you, so Ind AS talks about two types of modification. First is modification that is accounted as a separate lease, and second is a modification that is not accounted as separate lease. So कोई भी modification separate lease में तब recognize होता है ना when there is an increase in scope being increased is proposed सर वीडियो लैगिंग हो रहा है. Voice to break. the standalone price. So voice break हो रहा है. सर. अगर आपका सपोज करिए कि 1000 स्क्वायर फीट के लिए आप 2000 रुपया दे रहे थे और फिर आपका 1000 more square 500 more square feet and you are paying, you have to account for a separate lease. So Sorry, please. अभी आ रहा है क्या? हाँ sir. Yeah.
So India's 116 talks about two types of modification. One is the modification that is accounted for as a separate lease, and second is the modification that is accounting as a part of existing lease. So to make a modification as a separate lease, there are two criteria. One is there should be increase in the scope of the lease, and the consideration that is increased is proportional to the standalone price. इसमें क्या होगा, suppose you have entered into 1,000 square feet land, 1,000 square feet building for say let's 20,000 rupees. Now you have enhanced your area by 500 more square feet. Okay, and the consideration for 500 more square feet is 10,000 rupees. Basically same rate पे 20 per square feet पे इस पे आपका original lease था. So if the rate is same, that is at the standalone price, the rate is same and the scope increases, then in that case you have to account these modifications as separate lease. Otherwise you have to make it as a part of, otherwise you have to account it as a part of existing lease. तो existing lease में कैसे इसको account for करेंगे? If there is a decrease in scope, then in that case you have to calculate your lease liability as per the new lease payments, proportionately reduce the ROU. So suppose 1,000 square feet 750 स्क्वायर फीट पे आ गए, तो एट दैट केस जो आपको आरओयू का जो बैलेंस रहेगा एज दैट डेट, मेक इट प्रोपोर्शनल टू 75%, कैलकुलेट द लीज लायबिलिटी एज एट दैट डेट फ्रॉम द बिग फॉर द फ्यूचर लीज पेमेंट्स, और जो भी डिफरेंशियल है उसको आपको पीएल में ले जाना पड़ेगा. ये उतना जनरली इंटरव्यू में इतना डेप्थ में आपका जाएगा नहीं ये क्वेश्चन का, बट आपसे पूछ सकता है कि आपका जो है सो मॉडिफिकेशन कैसे कैसे अकाउंट होता है. ठीक है. So Ghanshyam, these are the basically questions that is asked from India's 116. There is one sale and lease back, but generally sale and lease back से questions नहीं आता है, लेसर के accounting से questions नहीं आता है. Right. So now again I have this two more important Indias. One is Indias 115 and other is Indias 109. कौन सा take up कर ले? 115 कर लीजिए. 109. 5115 115 ठीक रहेगा मेरे हिसाब से. So for 115 again, what was the rationale behind this 115? Although we already had this मेरे India's हिसाब से 18. एक काम कर सकते हैं आप, अभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लो. 115 109 ये लोग क्या करेगा, ये लोग उसके ऊपर में रिसर्च करेगा. जैसे क्या होगा, रिसर्च भी होगा. मेरे हिसाब से बेटर मैं रहेगा. क्वेश्चन एक बार डाल देता हूँ यार, मैं क्वेश्चन एक बार डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, हाँ so हाँ that हाँ. people are 115 109 आप at least डाल see, दो. और चाहे तो कोई प्रॉब्लम हो तो घनश्याम से अपने नंबर ले लो, अपने को कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको आंसर भी दे दूंगा. तो ना पहले आंसर मत सही- भेजिए, पहले चाहिए ये लोग रिसर्च करें, वो मैं जाता हूँ. मैं क्वेश्चन नहीं भेज रहा हूँ घनश्याम, मैं आंसर नहीं भेज रहा. हाँ, if they are in doubt, हाँ. then यस they can यस reach out to me. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ 115 109 आप क्वेश्चन भेजिए, आंसर रिसर्च करेगा, फिर आप देखिए सही दे रहा है कि गलत दे रहा है. दैट विल बी मच बेटर प्रैक्टिस. Right. वही मैं कर रहा हूँ, मैं एक बार के लिए क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ. खुद रिसर्च करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा. राइट. हाँ वो आप एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा. मुझे 2-3 क्वेश्चन ये था, जैसे आपका देना है, जैसे आपका CFO एडवाइजरी वगैरह हो गया, फैस हो गया, लाइक ओके, तो ये सब में स्कोप क्या है लॉन्ग टर्म में सीए के लिए? सीए के लिए सो इफ यू टॉक अबाउट बिग फोर का तो आपको पता ही है, जो लेवल से उस लेवल से यू राइज टू द पार्टनर लेवल एंड देन यू ब्रिंग द बिजनेस एंड ऑल. इफ यू टॉक पर्टिकुलरली अबाउट इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में इफ यू टॉक अबाउट द टॉप लीडरशिप पोजीशंस लाइक फाइनेंशियल कंट्रोलर का जो प्रोफाइल होता है, ग्रुप रिपोर्टिंग कंट्रोलर का जो प्रोफाइल होता है, वो सब प्रोफाइल में टॉप लीडरशिप आपको यहाँ मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी इंडस्ट्री हैज दिस कंसोलिडेशन टीम, दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टीम, उस सब टीम में आपको स्कोप है. ये हमारा बेसिकली इंडियन इंडस्ट्री का बात हो गया. एमएनसी का आप बात करें तो कमिंग टू आईबी, तो आईबी में एक लीगल एंटिटी कंट्रोलर का प्रोफाइल होता है. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड इन गोल्डमैन सैक्स, जेपीएमसी, सब में ये क्रेडिट स्विस, सब में एलईसी ये लोग हायर करते हैं. तो व्हाट एलईसी does is that they will what typically LEC profile involves is that they will send you a trial from, let's say you are LEC in Goldman Sachs, there is an entity for Goldman Sachs which is in France. So what they will do is that they will send you the trial balance of that French entity. You need to prepare the balance sheet with your team here. पूरा financials आपको यहाँ बनाना है. You need to coordinate with the auditor who are sitting in France. पूरा financial statement को audit कराना है and give the financial back to the French company.
ग्रेट ग्रेट। तो वैसा होता है कि आपको डिफरेंट गैप्स में जो है फाइनेंशियल बनाना पड़ सकता है, उसको ऑडिट कराना पड़ अटेम्प्ट का सकता कितना है। है यहाँ पर? मैं आई वांट अटेम्प्ट को लेके कितना है, कितना अटेम्प्ट तक मतलब ये सब तो प्रोफाइल में जा अटेम्प्ट सकता है? जनरली देखिए कि इसमें क्या होता है ना कि इसका जो एटलीस्ट मतलब बिग फोर का जो इंटरव्यू होता है, चाहे ये थोड़ा सा जो है ना एक्सपर्टीज लेवल का चीज हो गया। मतलब हाँ ऑडिट जनरली बच्चे करके आते हैं, हाँ हाँ। टैक्स करके आते हैं, बट इंडेस बहुत कम बच्चे करके आते हैं। राइट। सो उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा याद रहता है कि प्रीवियस आपका कोई इंडेस का एक्सपीरियंस है, तो वो नहीं है, जनरली जनरली प्रेफरेबल नहीं कि मिलेगा। कोई हाँ ट्रांजिशन आपने किया है तो वो जो है सो प्रेफरेबल होता है। सेकंड होता है कि अटेम्प्ट जनरली यार इसमें 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट से ज्यादा, 2-3 अटेम्प्ट से तो ज्यादा पक्का ही नहीं लेते हैं। 3 अटेम्प्ट इज मैक्स। ओके, 4-5 अटेम्प्ट हो जाए किसी का? 5 अटेम्प्ट्स में जनरली दे डोंट कॉल, मतलब अब बिग फोर ही है यार, कॉल कर भी सकता है, ऐसा कोई पॉलिसी कहीं लिखा हुआ नहीं है। बट जनरली व्हाट दे डू इज दैट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक मैक्स लेते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा इसमें वो आता है ना एक्सपर्ट ओपिनियन, बिकॉज वो रहता है कि यू आर सेइंग टू द क्लाइंट। अब बहुत टाइम ऐसा होता है ना घनश्याम कि वंस यू गो टू द क्लाइंट, क्लाइंट विल सर्टेनली कम विद सम टेक्निकल क्वेश्चन, हाँ हाँ एंड आपको ऐसा प्रिपेयर होना पड़ता है कि यू नीड टू गिव आंसर। आप ऐसा नहीं बोल सकते हम देख क्या जाते हैं। उसमें हाँ। तो मैक्सिमम टाइम क्या यू होता है कैन कि नॉट आपके डू पास दैट। रेडीमेड आंसर होना चाहिए, तो एटलीस्ट जो रेडीमेड आंसर होना चाहिए। बेसिक जो इंडेक्स है वो तो पता होना चाहिए। कुछ टेक्निकल है देन वी कैन से कि आई ऑल्दो थिंक दिस इज 5 व्हाट। अटेम्प्ट तक मैंने देखा है लोगों का, 5 अटेम्प्ट तक आई थिंक सो पॉसिबिलिटी है, 5 to 6। हाँ मतलब इंटरव्यू का कॉल आता है, ऐसा नहीं, मतलब आई वाज कॉल इंटरेक्टिंग आता विद वन है, ऑफ मतलब कॉल आता है, कॉल आता है, फिर उसका हाँ रील्स कॉल तो आएगा, आती नहीं है। आपको। अगर इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरव्यू, मतलब ऐसा नहीं हाँ है कि ओके, आपको तब सीधे तो रिजेक्ट बढ़िया कर है। दिया जाएगा। हाँ। हाँ और ये जो तो इसमें गोल्डमैन वो सैक यार आपका थोड़ा जो सा लीगल एंटिटी कंट्रोल होता है, आपका इलीगल एंटिटी कंट्रोल वगैरह, तो ये समय भी अटेम्प्ट्स कितना महीने देते हैं आपको लग रहा है? डायरेक्टली मिल जाता है लीगल नहीं, एंटिटी में? गोल्डमैन सैक्स तो फर्स्ट अटेम्प्ट पर कोई जनरली प्रेफर करता है, इज व्हाट मेरे टाइम तक तो ऐसा ही रहता था। पोस्ट दैट आई हैव हाँ। नॉट बीन एसोसिएटेड विद गोल्डमैन सैक्स, उस टाइम तो मतलब अभी भी शायद और उसका वही क्या होगा कि फर्स्ट क्राइटेरिया है अटेम्प्ट पर कोई आपका टाइम लेता में, है। मेरा टाइम में? हाँ मैंने देखा है इस क्राइटेरिया क्या है गोल्डमैन सैक का अभी? नहीं अभी लगा, आपका टाइम में क्या क्राइटेरिया था? मेरे टाइम में तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट था। जैसे मेरा गोल्डमैन सैक्स में हुआ था, एलआईसी प्रोफाइल में हुआ था, तो मैं Okay. एलआईसी में ऑल्दो बैंगलोर बुला रहा था तो क्या मैं गया प्रोसेस नहीं, क्या बट था? मेरा वो व्हाट वाज द प्रोसेस दैट टाइम? प्रोसेस मेरा उस टाइम क्या था ना यार, देयर गोल्डमैन सैक्स में बहुत सारे थर्ड पार्टी रिक्रूटर्स रहते हैं। So राइट। directly the company HR might not call you. Third party हाँ, recruiters will call थर्ड you. पार्टी होता है। They will send your CV across to the Goldman Sachs team. They will हाँ। shortlist your CV. Post date आपका जो है सो Goldman Sachs के HR से ये होता है, जनरली 4-5 राउंड इंटरव्यू होता है, और सारा इंटरव्यू जो है सो टेक्निकल होता है, ओनली लास्ट राउंड छोड़ करके। लास्ट राउंड आपका जो है सो बेसिकली जनरली जो वो वीपी लेवल रहता है ना, वाइस प्रेसिडेंट लेवल राउंड, वो जो है सो टेक्निकल नहीं होता। उसमें जनरली आपसे इंटरेक्ट करेंगे, दे विल ट्राई टू नो यू एज अ जो पर्सन। आर्टिकल सिर्फ स्मॉल फॉर्म से करके आता है उसको कितना दिक्कत आता है लाइक? देखिए इसमें क्या है कि आर्टिकल सिर्फ स्मॉल फॉर्म या मेजर फॉर्म बहुत ज्यादा, देखिए इसमें क्या होता है कि स्मॉल फॉर्म में सर्टेनली बिग फोर से तो डिफिकल्टी आएगा कि बिग फोर में ही ये स्पेशलाइजेशन है, स्मॉल राइट। फॉर्म्स जो है सो नहीं रखते हैं। ना। हैविंग सेड दैट स्मॉल फॉर्म्स में क्या होता है ना, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, बट स्टिल दे हाँ टेक अप दिस टाइप ऑफ जॉब्स। हाँ स्मॉल फर्म में इंडिया ट्रांजिशन कराते हैं। अपने यहाँ तो क्या है कि अपने जो अपना जो कंपनीज एक्ट है उसमें अपने जो है ऑडिटर हैं, तो कोई अकाउंटिंग एडवाइजरी सर्विसेज, बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। बट जनरली क्या होता है ना कि छोटे फर्म क्या करते हैं ना, ऑडिटर रहते हुए उसका ट्रांजिशन भी करवा देते हैं, एंड दे टेक एक्स्ट्रा फी एज ऑडिट फी। उस राइट। टाइम क्या होता है कि बहुत सारा क्लाइंट ऐसा रहता है उनका जो कि एस इंडियस में जाता है, तो दे डू दिस सेम टास्क व्हाट वी डू, बट वो ये थोड़ा कम रहता है इसमें, बिकॉज जनरली क्या होता है कि बड़ी कंपनियां पे इंडियस एप्लीकेबल है। बड़ी कंपनियां हैं, चाहे जो फंडिंग वंडिंग में जा रही है, जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस तरह की कंपनियां पे है। और जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है जनरली उनको बिग फोर का टैग चाहिए होता है सब कुछ के लिए। तो उसमें क्या होता है कि दे प्रेफर कि बिग फोर आकर के जो है सो हमारा ये ट्रांजिशन कर सके। छोटी में क्या होता है कि अगर आपका कोई क्लाइंट है जो कि ऑलरेडी कन्वर्ट हो रहा है जो आपका ऑडिट क्लाइंट है चाहे टैक्स क्लाइंट है, तो वो सब आपको काम दे देंगे, उस तरह से होता है। चाहे स्टैंड अलोन इंडेक्स 116 जब आया था, उस टाइम बहुत छोटा छोटा एंट्री था, जिसके पास 10 लीज था, 5 लीज था, 40 लीज था, 50 लीज था, उसके पास नहीं था 1000 लीज, तो क्यों बिग फोर को एक्वायर, मतलब बिग फोर को एंगेज करे? 50 लीज के लिए बिग फोर को क्यों एंगेज करेगा? तो उस तरह की एंटिटियां जो थी सो गई थी छोटे फर्म के पास, तो उस तरह का काम आता है। बट लार्ज चंक अगेन ये अकाउंटिंग एडवाइजरी का अभी बिग फोर के पास ही है। मेरा ये जैसे है अभी, जैसे कोई सीए फ्रेशर है, व्हाट आई हैव सीन, ओके जनरली ओके देखा जाए कि अटेम्प्ट्स मैटर करता है, पर जो बिग फोर में स्टैट ऑडिट डोमेन में घुसता है वही जाके प्रोडक्ट कंट्रोल या लीगल एंटिटी कंट्रोल में हम देखा है लोगों को जाते हुए। आई हैव सीन पीपल ओके कि हु इज रन इन स्टैट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, बेसिकली स्टैट ऑडिट दे कैन गेट इनटू प्रोडक्ट कंट्रोल और लीगल एंटिटी कंट्रोल डायरेक्ट। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इज इट पॉसिबल? और पॉसिबल है तो क्या चीज इंप्रूव कर सकते हो सामने वाला कि वहां पहुंच जाए मतलब?
सो देखिए, प्रोडक्ट कंट्रोल का तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है घनश्याम, फ्रैंकली स्पीकिंग, बट द लीगल एंटिटी कंट्रोलर का जो है ना, इसमें हाँ। आपका वही है कि आपका गैप पूरा सही रहना चाहिए। जैसे कि आप इंडेक्स पूरा ही पढ़ लीजिए, इंडेक्स 115 116 पूरा ही पढ़ लीजिए। और जो गोल्डमैन सैक्स होता है ना, वो सब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, उसमें आपको IFRS 9 का जरूरत पड़ता है बहुत ज्यादा। IFRS 9, IFRS ओके, IFRS 9 में कैसे ECL कैलकुलेट होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग होता है। IFRS 9 एक्सपेक्टेड इज वेरी क्रेडिट लॉस, इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, व्हाट इज प्रोविजन मैट्रिक्स, लाइफ टाइम ECL, ये सब जो होता है, 12 मंथ ECL, वो सारा चीज आता है। तो दे विल आस्क यू दैट क्वेश्चन, बट ऑल्दो आपका जो फ्रेशर लेवल पे है उतना डीप में नहीं जाएंगे, बट सर्टेनली दे विल थिंक, आजकल जा दे रहे विल हैं। वांट कि आपके पास IFRS 9 का ओवरव्यू तो होना चाहिए। आप हेज अकाउंटिंग क्या होता है, कितना तरह का हेज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो यू माइट नॉट हैव डन द हेज अकाउंटिंग, नहीं पता है हमको कि पीएल में कैसे इंपैक्ट जाएगा, बैलेंस शीट में कैसे Right. इंपैक्ट जाएगा, बट 3 तरह का हेज होता है, ये तो पता होना चाहिए कि 3 तरह का हेज कंपनी कर सकता है। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए, वो सब तरह का रहता है। फिर आपका कोई IB सब में लीगल एंट्री प्रोफाइल में आपको पूरा इंडेक्स पूरा आना चाहिए, पूरा आपका ये स्पेसिफिक ये इन्वेस्टमेंट वाला जो स्टैंडर्ड्स है वो आना चाहिए, 32 109 107। कंसोलिडेशन आना चाहिए, बिकॉज बहुत सारा कंसोलिडेशन रहता है उस लोग में, बिकॉज उन लोग का क्या होता है कि बहुत सारा सिस्टर कंसर्न रहता है, तो एक दूसरे में कंसोलिडेट होते रहता है। सो इट्स नॉट दैट कि लीगल एंटिटी कंट्रोलर में क्या होता है ना, इट्स नॉट दैट दे विल allocate you one entity to manage, मल्टीपल एंटिटीज देता है, आपको 10 एंटिटी दे देंगे। मान लीजिए फ्रेंच का पूरा टीम है, वो बैठा हुआ है इंडिया में, तो फ्रेंच में मान लीजिए 17 एंटिटी रजिस्टर है, 17 का पूरा आपको मैनेज करना है फाइनेंशियल। उसमें कंसोलिडेशन भी बहुत ज्यादा रहता है, तो कंसोलिडेशन का वहां पे क्वेश्चन आता है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है कंसोलिडेशन में, तो वो सब क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा आपका जो है सो यूएस गैप पे पकड़ होना चाहिए। यूएस गैप इन द सेंस कि आपको यूएस गैप पता नहीं होना चाहिए, बिकॉज यूएस गैप, नो सिंस नोबडी हैज वर्कड इन यूएस गैप पर्टिकुलरली इन इंडिया, तो पता नहीं होना चाहिए। बट डिफरेंस क्या है यूएस गैप में और इंडिया में, अब गूगल मारिए, आपको जो है सो टॉप 10 डिफरेंस, टॉप 15 डिफरेंस मिल जाएगा, तो डिफरेंस एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यूएस गैप में इंडिया में ये अलाउड है, यूएस गैप में ये अलाउड नहीं है, वो डिफरेंस एटलीस्ट पता होना चाहिए। बिकॉज सर्टेनली दे विल आस्क हैव यू वर्कड एनी अदर गैप, no, I have not worked in any other gap, but certainly I know what are the major differences between US gap and the Indias. Right. फाइनेंस रिलेटेड क्या कर सकते हैं? इंडियस हो गया, तो फाइनेंस रिलेटेड कुछ पूछ सकता है क्या लोग? फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड तो आपका एसएसएन का कांसेप्ट यही पूछता है, जो बेसिक कांसेप्ट होता है, एनपीवी, आईआरआर, रिस्क फ्री रेट, यही सब पूछता है। रिस्क फ्री आपका रेट, बीटा क्या हुआ, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, फ्यूचर ऑप्शन क्रेडिट डेरिवेटिव्स, डिफॉल्ट स्वैप, बीटा, यही सब पूछता है। मतलब मेजरली उसमें बहुत ज्यादा ये नहीं पूछे, ग्रिलिंग बेसिकली उसमें गैप पे ही होता है, जो लीगल एंट्री कंट्रोलर्स का प्रोफाइल है ना। until unless, देखिए अगेन व्हाट आई से कि इंटरव्यू इज समथिंग ना वेयर इन बेसिकली यू नीड टू टर्न द टेबल। अब अगर सामने वाला को मौका दे दीजिएगा ना, तो फिर देन यू आर गॉन। आई ऑलवेज से कि इंटरव्यू इज अ प्लेस वेयर यू नीड टू टर्न द टेबल, यू एक्सप्लेन सच थिंग्स टू द इंटरव्यूअर कि वो उसमें इनग्रॉस हो जाए, एंड दे आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग। सो ऑलवेज ट्राई टू से इंटरव्यू आपको जो बहुत अच्छे से आता है, जिसमें आप इनग्रॉस कर सकते हो, अगर आप उसको दे दिएगा ना, खुला मैदान छोड़ दीजिएगा ना, तो वो आपको जो है सो कुछ भी पूछ लेगा। कुछ भी पूछ So लेगा, I राइट? always ये say बात try to turn the बहुत table. सही है। वही मतलब बुलवाओ जो आप बुलवाना चाहते हैं, मतलब हाँ, वही आप जो बुलवाओ जो, बुलवाना चाहते हैं, आपको इसमें एक्सपर्टीज है, आप वो हाँ बताइए उसको। ठीक है, वो हाँ एक दो हाँ, क्वेश्चन पूछेगा, वो आपके तरफ भी छोड़ेगा, क्रॉस वो क्वेश्चन मतलब करेगा, आपको ही क्रॉस मौका देगा क्वेश्चन कि तुम करेगा, बोलो भाई कि राइट? क्या किस इंडिया से पूछे ठीक तुमसे, है, आप तुम जैसे बोलो आपने भाई कि फर्स्ट इतना अटेम्प्ट में एरिया क्लियर तुम। किया, हाँ आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, आप इतना साल से देख लिया, बहुत सीए फ्रेशर्स को आप देखा होगा, आप बताइए दो तीन गलती होती है जो सीए फ्रेशर हर कोई करता है सीए बनने के बाद। 3 गलती आप देखा है हर कोई करते हुए, और जिसके कारण ग्रो नहीं कर पाता है वो, आप देखा होगा अपने पीयर्स को, किसी को भी 3 गलती जिसके कारण ग्रो नहीं करता है वो, टैलेंट होने के बाद भी। First is the basically communication skills, boss. Communication skill is the, I say, highest paid skill in the world. You know, the content creators, the YouTubers, they are getting paid. राइट, What they have? They have the communication skills. हमको ही पता है भाई एप्पल आईफोन कैसे चलता है, हम भी अनबॉक्स करके दिखा देगा, बट जिस हाँ, हिसाब से वो दिखा रहा है, that is what he is getting paid for. राइट राइट I राइट, also know the unboxing of एप्पल आईफोन, हम भी हाँ आईफोन हाँ। प्रो पहला खरीद के दुबई से लेते आएगा, अनबॉक्स कर देगा, but that is the communication skills that they are being paid. So communication skills कम्युनिकेशन are में क्या always क्या is the चीज highest. इंप्रूव कर सकता है? लाइक कम्युनिकेशन में पैरामीटर्स है, क्या क्या चीज इंप्रूव कर सकता है एक सीए फ्रेशर? देखिए कम्युनिकेशंस में बेसिकली क्या होता है, एक तो हम अपना
certainly since we are into this Indian environment, तो urge जो रहता है हम लोग का वो तो चलते ही रहता है. But having said that, we should try to avoid this. जितना level पे हम लोग avoid कर सके. Second, you should कभी-कभी ये ऐसा होता कीजिएगा, है ना, रिपीट people are करिएगा, क्या बोलना चाह रहे थे ये वाला पॉइंट? अच्छा बोल रहे थे, क्या पॉइंट बोलना चाह रहे थे ये वाला आप? so generally what we say yeah, so I was thinking, इस तरह से हम लोग जो hesitate करते हैं बीच में same thing को ब्लर repeat करते करते हैं, हैं ना. हाँ 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 हाँ, Please avoid राइट, that cluttering, please avoid that कि वो बहुत negative impact देता है, because you know रुक जाता है हम लोग, so रुक जाता industry है, में तो वी स्टॉप हाँ इन इंडस्ट्री बिटवीन। में तो हाँ इंडस्ट्री में तो फिर भी आपका चलेगा यार, वहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स इंडियन एमएनसी में उतना डिमांड नहीं है. बट इफ यू गो फॉर अमेजॉन इंटरव्यू, इफ यू गो फॉर फ्लिपकार्ट इंटरव्यू, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द ओवरसीज काउंटर पार्ट. राइट राइट, वहाँ पे अगर आप यहीं पे क्लटर करने लगेंगे इंडियन काउंटर पार्टी के साथ, तो हाउ विल यू इंटरेक्ट विद देयर ग्लोबल टीम्स? दैट इज द मेजर कंसर्न. कमिंग टू द बिग फोर पॉइंट, अगर आप बिग फोर में हो तो यू हैव टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट डे इन एंड डे आउट. राइट, तो अब अगर डे इन एंड डे आउट आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना, तो यू शुड हैव सच ए कम्युनिकेशन स्किल्स कि क्लाइंट आपकी बातों से ठीक है. देयर आर पीपल यू नो इन द टीम्स हु कैन काम डाउन द क्लाइंट, एंड देयर आर पीपल इन द टीम हु कैन टेक द क्लाइंट टू डिफरेंट लेवल. तो उस तरह का होना चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इजी, हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ यू टेक ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज बी ग्रेटिट्यूड. राइट मतलब राइट, 2 मिनट लेट हो गए तो ऑलवेज से सॉरी कि सॉरी फॉर बीइंग लेट, इस तरह से हाँ हरदम ये सब करिए. चीज हम देखे हैं, वो हाँ ग्रेटिट्यूड लेवल का, ह्यूमिलिटी ग्रेटिट्यूड इज समथिंग व्हिच दे डोंट एक्सप्रेस बहुत प्रॉपर्ली। ज्यादा चाहिए. हाँ इट इज ऑलवेज गो प्रिपेयर्ड फॉर दिस, फॉर द इंटरव्यू. मतलब ऐसा नहीं होता कि कॉल आ गया चल गया कैजुअल, बैठ गए इंटरव्यू में. हाँ ये was बहुत the गलत है। first 4 minutes of the interview or the 2 minutes interview, I can say you are going to get selected or not. 3 राइट, से आई 4 सेड मिनट में दिस, सब. मैंने अभी 2 घंटा पहले ये बात बताया था। हाँ, आपका जिस तरीके से आप ऑफर में अपना दिखाता है सीरियसनेस, वो बहुत मैटर करता है आपका इंटरव्यू में। बस 4 मिनट हम किसी का इंटरव्यू लेगा ना, आई विल बी सेलिंग कि आई एम गेटिंग टू गेट हिम ऑन द पेरोल और आई एम रिजेक्टिंग हिम. 4 मिनट में आपका हावा बता देगा बॉस. आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा ना, उसको पता चल जाएगा कितना आप पर क्या है. ठीक है, कितना आप पर क्या है, कितना आप सीरियस, आपके पास जॉब ऑफर है कि नहीं है. दैट पीपल नो. बीइंग अ इंटरव्यूअर, आई आल्सो सिट ऑन अ इंटरव्यू टेबल नाउ. मैं भी जो है फ्रेशर का इंटरव्यू लेता हूँ, तो मेरे को पता होता है कि इसके बैकग्राउंड, बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है. राइट, एंड आई नो कि इसका ये एटीट्यूड है, ही मस्ट हैव समथिंग कॉल्ड, उसके पास कोई ऑफर है, इस वजह से वो आके बैठा हुआ है ऐसे, नहीं तो वो ऐसे नहीं बैठेगा. सो आई कैन नो कि मैं बता दूंगा कि उसके पास ऑफर लेके आया हुआ है, कि वो ऐसे ही इंटरव्यू है, कि वो सीरियसली इंटरव्यू है, actually he is interested in this job or not, actually he will stay or not. You know, the first thing, you know, मैं आपको बताता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. I was interviewed for this Goldman Sachs. ठीक है, the first call I got after qualification, में Goldman Sachs से कॉल आया था for this legal entity controller का प्रोफाइल. उसमें क्या हुआ था ना, so I was into this, मेरा आर्टिकल से भी Deloitte से था, in this accounting advisory profile only. तो मैं जो है सारा ये अकाउंटिंग एडवाइजरी का जानता था, तो इसका मेरे को इन एंड आउट पता था कि हाउ द फाइनेंशियल इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज रिपोर्टेड, हाउ टू गेट द ऑडिटेड, सब मेरे को पता था. तो आई वाज परफेक्टली फिट, perfect match for their role. सारा कुछ हो गया, टेक्निकल्स आर क्वालिफाइड. पोस्ट दैट देयर वाज अ वीपी राउंड. ठीक है, so now when there was a VP round, he asked me, boss, why Goldman Sachs and why this legal entity controller? तो वहां मेरे मुंह से क्या निकल गया ना, जो मैं जनरली व्हाट आई एम एक्चुअली, वो मेरे मुंह से निकल गया कि बॉस आई एम वेरी गुड एट रिसर्च स्किल, बिकॉज यू नो इस तरह के प्रोफाइल में आपका रिसर्च स्किल बहुत तगड़ा होना चाहिए. आपको 2 मिनट में आपका बॉस ला के बोलेगा कि बॉस देखो ये ट्रांजेक्शन है, इसका क्या क्या ऑप्शन है, बताओ हमको. हो सकता है आपको नहीं पता हो, यू हैव टू गूगल थिंग्स, यू हैव टू गूगल द बीइंग इन अ पीडब्ल्यूसी, यू यूज अदर बिग फोर मटेरियल्स आल्सो. हम लोग जो है बहुत सारे बिग फोर मटेरियल को रेफर करते हैं, अदर मटेरियल को रेफर करते हैं, गाइडेंस नोट को रेफर करते हैं. तो आपको बहुत अच्छा तगड़ा रिसर्च स्किल होना चाहिए. आपको 6 घंटा दिया जाएगा, बॉस सुबह में काम देगा, एंड ऑफ द डे में आपको बोलेगा कि भाई हमको जो है सो ये अभी जैसे इंडेक्स 115 आया था, बहुत सारा डिस्क्लोजर है उसमें, उसको प्रेजेंट कैसे करना है. डिस्क्लोजर तो बोला है इंडेक्स 165 में, इंग्लिश में बोलेगा एक्चुअली. 2-3 साउथ इंडियन है, सॉरी टू इंटरप्ट, इंग्लिश में बोलेगा 2-3 साउथ इंडियन में, और ये चैनल भी जाएगा अभी यूट्यूब पे, इसलिए दैट्स व्हाई यू आर सेइंग वेरी गुड पॉइंट. दैट्स व्हाई या you should have very good research skill in these profiles. Right. So what was the index 115 came, it said that you have to disaggregate your revenue, you have to show the reconciliation of your contract asset liabilities, but how that needs to be shown. So you have to see the research skill, you have to see the model financial statement, you have to see the guidance note, and then you have to come up with solutions. Okay. I mean, like now I'm doing one of the client wherein they are saying they won't calculate ECL. So we will say that you have this options. Now it is your choice to calculate or not to calculate. So you need to have very good research. So what mistake I did in my Goldman Sachs interview is that I said to the VP that I am very good at my research skills. I am a very good researcher. I can get your questions solved within a day, within a minimum stipulated time. So Right. he said, fine. I said that is absolutely great. But tell me,
why do I need you here? I need you to prepare the financial statements here, right? So what research skill I need, you need to be here. So I said, sir, so the recruitment was for one of the French, their French sister concern that I need to prepare the financial as per French gap. So what was this? So I said, sir, I will be learning French gap. I will be researching on the French gap. So that will be really enhance my knowledge skills as well. And I will continue with my research skill. Then the VP says, boss, this is the thing that is going for a next quarter or two. Once you do for next 2 quarters, you will be through the French gap. You will know in and out of the French gap. Post that there is no research in that because there is the same entity because the in Big Four what you generally client gets changed, so the transaction gets changed. You have to research, but once you are into industry, it is same client, same transactions, same exemptions. So you don't have to research anything new until unless there is new transactions being entered by the company. So I said, so the VP told me, so I am very good. I am very comfortable to hire you, but what concerns me is that you have been into this research profile, and if I hire you, you will get bored within next 6 months because there is nothing research after 6 months here. So you will get bored, and I'm really concerned that you might not stay long in a Goldman Sachs. That was his real concern, and that somehow then he said, I can go ahead, I can give a go ahead not to the HR, but still I want you to consider it. Do you actually want to join Goldman Sachs? Because you won't be running through your this skills, this research skills. So in that case, I said I need to rethink. Then the VP said, if you need to rethink, it means you're not fit for this role. Okay. So that is the thing that what you are for what, What you are was the appearing final and how result? you are. What was the final result, So by the way? finally the VP was said ki if you are trying to come, you come. We can give a go ahead, but certainly you are not going to stay. So you make up your mind. So I said, okay, I will not join then. Okay. So I only rejected. I will say ki, okay, I will not join then. Okay, okay. So sometimes rarely you will get such an interviewer who can give you such a clarity. They don't talk so openly in the interview, but there are people who talk openly in the interview. So rarely you will get such type of people, but certainly there are people. So what you are appearing and how you need to say the words in the interview, that really matters. So instead of research skills, I had said I am very good at managing the financial statement, preparing the financial statement. That would have worked for me. But since I have said that that was a very good skill. If you talk about the market, it was a very good skill. But having said that skill, my job was lost. I didn't. I This have to question is finally difficult go actually. forward. Why should we hire you? Because this question only हाँ. they check. So होता है ना कि you should, what you are saying, you should be very conscious of the choices of words that you make while in the interview. For communication skills, first cluttering should be avoided. Second, you should be very conscious of the choices of the words you make. Third, your CV should always be aligned to what the job description is. Right. Absolutely. Don't make one standard CV. But while sending a CV, a standard CV will work for your statoid profile. It will work for your IA profile. Generally, इस दोनों में आपका काम आ जाएगा. But if you are going for a tax, if you are going for this accounting advisory CV, your standard format won't work. So you need to customize your CV as per the job description, JD. It is not easy for a CFRSer also to do so many things. They think they will check YouTube and all, they will learn this much. It is not that easy also for accepting them. No, boss, this comes from experience. Yes, that is not easy. What I am saying Now it also, is this easy comes for from us to say, experience. it's not easy. I can say here, but even I have to do, it takes a lot of effort. I have recently switched job from Tata Steel to this PwC. So even I have to make modifications in my CV. There are 3-4 sets of CV that was ready, either one for the industry, one for the Big Four, one for the FP&A profile. So there were different CVs for different profiles. Different CVs you have to make. I need to select which CV I need to send to whom. So you should have the CV customized, and that actually shows the eagerness for the job. That actually shows the eagerness, how much you are interested in the job. If your CV does not match with the job description, why the hell they will shortlist you? Sorry for the word, but why will they shortlist you? Being an interviewer, why will I shortlist someone who does not have India's skills? Common sense. So you should have this कि आपका पास ये CV should be customized. Second, prepared होके तो जाइए. Third, be punctual and all. Communication skills should be good. Apart from that, where to go, how to, and what I say, get one job, get first offer. Post that, think where you actually need to go. Right.
Matlab, there are various opportunities in the market, but what exactly excites you? I have the option of going into the audit. Post my qualification, I could have easily gone into the audit, Big Four audit. I was a Big Four article, Big Four audit was always there for me, but I chose not to Yes. go. So that should be your choice, and you should be well aware enough what you need or what actually is your aspiration, what you want to aspire, what you aspire to be. It is that difficult actually for a fresher, okay, to know where to go also. They don't know they again it is difficult to know for them. Because you are the वो सिर्फ ऑडिट करके आया, उसको तो ऑडिट ही पता है ना, उसको नहीं पता है कि क्या होता है अकाउंटिंग एडवाइजरी, उसको नहीं पता एक्चुअली है कि सबको नाम से पता होता है। जब आई हैव सीन सो मेनी सीए फ्रेशर्स, उसको खाली नाम पता रहता है, नाम एक्साइटिंग रखता है, like CFO advisory or investment banking, they just know the name, okay, they don't know what the work there, and they feel that that is their passion, but they only know the names there. और नेम देख के वो जाने का कोशिश करता है, so वो that is the problem. Professional help comes into picture. Yes, that's we are there to guide you guys, we are there to guide you. तो मैं ये आपका आज का सेशन इतने रखूंगा, 1 मिनट का है, पर मेरे को एक टाइमिंग आप देखिएगा, तो आपको जैसे ऑफिस का होता है, तो आपका सेशंस आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल हैव गॉट बेनिफिटेड, तो मैं चाहूंगा और भी आप सेशंस रख पाओ, ओके। आप हमको एक टाइमिंग बताइएगा, तो दैट टाइमिंग के हिसाब से हम लोग रख सकेगा और क्वेश्चंस वगैरह और डिस्कस करेंगे। आपको आई नो इट्स अ वेरी बिजी शेड्यूल, बट आप जैसे जैसे आपको टाइमिंग मिलेगा आप डेफिनेटली बताइएगा इसको लेके। डिस्कस दिस ऑफलाइन या ऑफलाइन डिस्कस करके आपको टाइम दे दूंगा, जरूर। And guys, any of you can, I am in the group, you can reach out to me in the group or personally or on the LinkedIn, कहीं भी आप reach out कर लो, I will be happy to help. I have already posted the I will be happy to help. ठीक है, ये मीटिंग एक्चुअली एंड ही हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर बैकअप कर रहा हूँ। इट वाज ग्रेट सेशन एक्चुअली, एंड यू शुड ऑल थैंक टू अर्जित सर फॉर सच अ ग्रेट सेशन एंड इन टुडेज टाइम। ग्रेट, थैंक यू सो मच। Thank you for Please write in the group also the feedback, okay? sir, please send more sessions. Thank you.